Yes, good morning, children. 24th August, Monday, revision of Introduction to Graph. Last chapter of this FA2 for revision. So I have taken important things in this chapter. This is not very lengthy, very easy. What is a graph? Graph is a visual representation of data. Graph is a visual representation of data. Is called your graph. Now, a linear graph displays data that changes continuously over period of time. Okay. Now, this graph can be in form of a table, graphically presentation, either in news in your TV. You have to watch that corona graph is given to you, the different countries, number of affected case, number of death rate. All these in a school you have to note down the enrollment of the school, number of students, number of boys, number of girls, different types of table. Linear graph displays data that changes continuously over period of time. Cartesian plane. In Cartesian plane, take a graph paper. Graph paper is of this type. You can take your Cartesian plane. In Cartesian plane, you can take a graph and take a graph paper and mark a point O on it. This is a, suppose this is your graph. Verbally, I have to draw two, or one is horizontal line, other one is vertical. Two perpendicular lines, they meet at point O. This point O is called your origin. Draw a horizontal line. Horizontal line is your x-axis and vertical line is your y-axis. Both horizontal and vertical lines meet at point O, and from 0 to x is called your x-axis and 0 to y is called your y-axis. In x-axis we take the point start from 0. 0 is called your origin. In origin, your x coordinate and y coordinate both are 0, 0. In this point, where these two perpendicular lines meet is called your origin. In origin, your x coordinate is 0 and y coordinate is your 0. If a point which lies on x-axis, then its coordinates are x and 0. If a point which lies on y-axis, then its coordinates are 0 and y. And if a point which lies on y-axis, अगर कोई भी पॉइंट वाई एक्सिस में लाई कर रहा है तो उसका एक्स कोऑर्डिनेट आपका 0 होगा और वाई 0 और वाई. ओके. और ऐसा पॉइंट जो लाई कर रहा है एक्स एक्सिस में, एक्स जो पॉइंट होगा वो आपका एक्स और वाई जो आपका 0 होगा. ये इसमें वाई जो आपका ये 0. ये भी आपको क्वेश्चन आएंगे वर्कशीट में. सो टेक ए ग्राफ पेपर एंड मार्क ए पॉइंट ओ, ड्रॉ ए हॉरिजॉन्टल लाइन ओ एक्स एंड वर्टिकल लाइन ओ वाई मीट एट ओ. ओ इज नोन एज origin and OX and OY are known as x-axis and y-axis. OX is known as x-axis and OY is known as y-axis. Again look here in your book, again OX is called your x-axis and OY is called y-axis, and plane XOY plane is called your, whole this plane is called your Cartesian plane. This is called your Cartesian plane. Now we plot a point on this grid and graph papers. This type of graph papers you can use it for plotting a point. First of all, you have to draw two perpendicular line. One is horizontal and other one is vertical. Okay, so plotting a points on a Cartesian plane. I here take your x coordinate is your 4 and y coordinate is your 3. These points are equal distance from 0, x-axis and y-axis. Alright, so 1, 2, 3. Your y-axis is your 3 and x-axis is 1, 2, 3, 4. X-axis is your 4. So at B, here coordinates are 4 and 3. And at A, coordinates are 4 and 0. And at C, coordinates are 0 and 3. If anybody asks, write the coordinates of point C. Here x-axis is your 0 and y is your 3. At A, write the coordinates. At A, coordinates are x coordinate is your 4 and y is your 0. 4, 0 and 0, 3. And at B, here coordinates are 4 and 3. Now
AB. What is AB and what is BC? Yes, AB is a distance from B and perpendicular from x-axis. Perpendicular from x-axis is called your y coordinate, or this is also called your ordinate. This is also called your ordinate. So here ordinate is your 3. And what is BC? It is a distance from B and perpendicular from y-axis is called your x coordinate, and this is called your abscissa. So perpendicular distance from y-axis is called your abscissa, and perpendicular distance from x-axis is called your ordinate, and this ordinate is called your y coordinate, and abscissa is called your x coordinate. Is it okay? It is very important. You have to go through this concept. Yes, perpendicular distance from B. Here this is point B. What is BA? Perpendicular distance from B from x-axis is called your ordinate, or here ordinate is your y coordinate, that is 3. And BC is perpendicular from BC is the distance from B perpendicular from y-axis is called your x coordinate, and also, or it is also called your abscissa. So here x coordinate is your 4. So in this way we can plotting a point on Cartesian plane. Next, y coordinate is called your ordinate and x coordinate is also called your abscissa. So don't forget abscissa, ABSCISSA, ordinate ORDINATE. Here x coordinate is 4 and y coordinate is 3 in this. Next, now book questions, worksheet first. Look here. Write the answer to each of the following questions. What is the name of the horizontal and vertical line? Horizontal line is called your x-axis and vertical line is called your y-axis. Write the name of the point where the above two lines intersect. That point is called your origin. Where two lines, horizontal line and vertical line, intersect. Next, plot the following points on graph. So in this 506200, so this is a graph papers. First of all, for plotting these points, first of all you have to draw two lines. One is horizontal, other one is vertical, and take your scale along x-axis. Take your one scale is equal to one big division is equal to dash, and one along y-axis one big division is equal to dash. After that point you point. In this way you can suppose this is your point. First is your 50. This is your graph. Here 5 is this, and x-axis is your 5 and y is your 0. So this is your 5 0. Next is 62. X is your 6 and y is your 2. Join them. This is called your 62. In this way you can plot a point on a graph papers. Now find the coordinates of the point PQRS in the figure. Coordinates of point. Now graph is given to you. From these you have to write the coordinates of point P. Now look here, P. So here this is called your y coordinate and this one is called your x coordinate. So here x coordinate is your 2 and y coordinate is your 3. The coordinates are 2 and 3. X coordinate is your 2 and y coordinate is your 3. Now write the coordinates of Q. X is your 6 and y is your 5, 6 5. Write the coordinates of R. X coordinate is your 4. This is your 4 and y coordinate is your 8, 4 8. In this way you can write the coordinates of the given. Similarly, go for fourth and fifth. Plot the points 2 2 4 2 6 6 on a graph papers and join these points in a pair. इनको पेयर में आपने join करना है. Do they lie on the line passing through the origin? उनको आपने बढ़ाना है. जैसे ये पॉइंट सही है, अब इसको पास करेंगे तो ओरिजिन में ही, ये भी ओरिजिन में, मगर ये Q और R जो ओरिजिन में पास नहीं होंगे, ये उस तरह ही आपका ये. अब देखो, state true or false, give reason for your answer. A point whose x coordinate is 0, a point whose x coordinate is 0 will lie on the y axis. True. अगर x coordinate आपका 0 है तो वो नेचुरली वो y पे लाई करेगा. देखो ये आपका ये here if x coordinate is 0, नेचुरली वो जो आपका पॉइंट है वो कहाँ लाई करेगा, y axis में करेगा. यस, ए पॉइंट whose y coordinate is 0 will lie on the axis, ये भी ट्रू आपका ये. ए पॉइंट whose y coordinate is 0 is lies on x axis. Yes, true. The coordinate of the origin are 1 1. This is your origin. Origin के coordinate क्या होते हैं, 0 0 होते हैं. Next part is your
construction of graph. So you have to revise this complete chapter. This is not very lengthy. So I take this full chapter today, construction of graph. So constructing a graph, we have to know about these two main things, that is independent variables and dependent variables. What do you mean by independent variables? The variables whose values do not depend on the value of the other variables. The variables whose values do not depend on the values of the other variable is called your independent variables. And dependent variables, the variables whose values depend on the value taken by the other variable is called your dependent. So I have given the concept of this independent variables and dependent variables. This is because before drawing the graph, which you take your x-axis and which you take your y-axis, it depends upon independent and dependent. Independent variable is always represented along x-axis and dependent variable is along represented on y-axis. Dependent variables को हम y-axis में लेंगे और independent. Yep, this is x-axis called your independent variables and y-axis is called your dependent variable. क्योंकि डिपेंडेंट में वैल्यूज वेरिएबल की क्या कर रही हैं, वेरी कर रही हैं, और इंडिपेंडेंट में वैल्यूज क्या कांस्टेंट है, डू नॉट वेरी, दैट इज कॉल्ड कांस्टेंट. तो कांस्टेंट जो वैल्यू है, जैसे नंबर ऑफ डेज, अब नंबर ऑफ डेज मंडे, ट्यूसडे, वेडनेसडे, मंडे विल रिमेन मंडे, ट्यूसडे, सो दिस इज इंडिपेंडेंट वेरिएबल्स. और रेनफॉल इन मंडे, रेनफॉल इन दिस इज योर क्या डिपेंडेंट वेरिएबल्स, बिकॉज रेनफॉल मंडे में जो रेनफॉल है वो इतने सेंटीमीटर, ट्यूसडे में अलग होगी, वेडनेसडे में अलग, ये वैल्यूज वेरी हो रही है, दैट इज कॉल्ड योर डिपेंडेंट वेरिएबल्स. सो वी टेक इंडिपेंडेंट वेरिएबल्स अलोंग एक्स एक्सिस and dependent variables along y. And one more, that kink, you can use kink. Kink का यूज ग्राफ में कैसे करते हैं? सपोज करो दिस इज योर टू लाइंस और it is you can use kink along, this is your one big division, use kink. This kink is, this is called your kink. Either this kink, you can take your kink along axis. Kink means इसमें जो नंबर्स फॉल कर रहे हैं वो नहीं है, आपका जो ग्राफ है वो यहाँ से स्टार्ट होगा ये. ओके, देखो मैं एक क्वेश्चन से आपको करा रहा हूँ. देखो ये क्वेश्चन बुक के क्वेश्चन में भी ले रहा हूँ इसमें. यस, फॉलोइंग टेबल्स गिव्स द इंफॉर्मेशन अबाउट रेनफॉल ऑन 7 कंसेक्यूटिव डेज इन द मंथ ऑफ जुलाई इन ए पर्टिकुलर ईयर्स. डे जुलाई, फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड. अब डेज जो आपका जुलाई का ये आपका कांस्टेंट है, ये इसकी वैल्यूज जो वेरिएबल की है वो दूसरे वेरिएबल के ऊपर नहीं डिपेंड कर रही है. दिस इज कॉल्ड योर कांस्टेंट. एंड रेनफॉल इन सेंटीमीटर, दैट इज डिपेंडेंट वेरिएबल्स. रेनफॉल क्या हो रही है, वेरी कर रही है. अब फर्स्ट डे में रेनफॉल 12 सेंटीमीटर हो रही है, सेकंड में 14, थर्ड में 10, फोर्थ में ये वेरिएशन हो रही है, इसकी वेरी कर रही है. सो दिस रेनफॉल यू हैव टू टेकन अलोंग एक्स एक्सिस, सॉरी वाई एक्सिस, एंड डेज यू टेकन अलोंग एक्स एक्सिस. देखो यहाँ पर भी आपका ये नंबर ऑफ डेज अलोंग एक्स एक्सिस एंड रेनफॉल अलोंग वाई एक्सिस. वाई एक्सिस में वैल्यू वेरी कर रही है और डेज आपके कांस्टेंट है, जो डू नॉट वेरी. इंडिपेंडेंट वेरिएबल्स को आपने एक्स एक्सिस में लेना और डिपेंडेंट को आपने वाई एक्सिस में लेना है. और यहाँ पर वैल्यूज जो हैं, डेज आपका 1, 2, हेयर स्केल यूज 1 बिग डिवीजन इज इक्वल टू 1 डे, एंड अलोंग वाई एक्सिस 1 बिग डिवीजन इज आल्सो इक्वल टू 1 सेंटीमीटर. बट ये नंबर स्टार्ट फ्रॉम 10, 12, 14, 10, 18, 10, 16, 15. स्मॉलेस्ट नंबर इज 10. So 0 to 10. So here you can use kink. Kink mean your graph start from 10, not 0. After that 1 big division is equal to 1. देखो कांस्टेंट है ये. 10 to 11 1 यूनिट, 11 to 12 1 यूनिट, 12 to 13 1 यूनिट, 13 to 14 1 यूनिट. सेम डिस्टेंस है ये. ओनली 0 to 10 में आपका 10 यूनिट आ रहा है. इस यूनिट को और इस वेरिएशंस को दूर करने के लिए यहाँ पर किंक का यूज कर रहा है. किंक मीन्स योर ग्राफ स्टार्ट फ्रॉम 10 नॉट 0, क्योंकि इस 1 बिग डिवीजन में आपके 10 यूनिट है और 10 to 11 में 1 है, 11 to 12 में 1 यूनिट, 12 to 13 1. ये सारा आपका कॉन्स्टेंट आ रहा है. 10 to ऊपर 1 यूनिट आ रहा है, इसमें 10 आ रहा है. दैट इज वाई ही कैन यूज योर किंक अलोंग वाइज. किंक का यूज किया. इस वे से आपने पहले स्केल को यूज करना है और इसमें राइट साइड में करना है स्केल यूज अलोंग एक्स एक्सिस,
one big division is equal to 1 day, and along y-axis one big division is equal to 1 centimeter. 1 centimeter. इस वजह से आपने नेक्स्ट आपका एक और क्वेश्चन आपका ये, द एरिया ए ऑफ ए स्क्वायर एंड इट्स साइड आर कनेक्टेड बाय द रिलेशन ए इज टू एरिया इज टू साइड इनटू साइड. ये एरिया आपका स्क्वायर है, तो यहाँ पर एरिया योर साइड इज योर, हियर साइड इज योर इंडिपेंडेंट वेरिएबल्स एंड एरिया इज योर डिपेंडेंट वेरिएबल्स. एरिया को आपने अलोंग, क्योंकि साइड अगर 1 होगी तो एरिया आपका क्या होगा 1, साइड 2 होगी तो एरिया क्या होगा 4, साइड 3 है तो एरिया आपका क्या होगा 9. तो ये जो एरिया आपका वो डिपेंडेंट वेरिएबल्स है और साइड जो आपकी इंडिपेंडेंट वेरिएबल्स. अलोंग एक्स एक्सिस आपने साइड लेना और अलोंग वाई एक्सिस आपने क्या लेना है, एरिया लेना है. और स्केल यूज कैसे करना है यहाँ पर, स्केल यस अलोंग एक्स एक्सिस ये वेरी सिंपल है. 1 बिग डिवीजन इज इक्वल टू 1 सेंटीमीटर या 1 यूनिट, 1 यूनिट और 1 सेंटीमीटर. एंड अलोंग वाई एक्सिस यहाँ पर देर इज नो नीड टू शो हेयर किंक बिकॉज 0, 4, 8, 12 दिस इज इक्वल डिस्टेंस. देर इज नो नीड टू शो हेयर kink. So you can take a 0, 4, 8 along y axis. One big division is equal to 4 unit. One big division is equal to 4. In this way you can draw a graph. So this is about your revision of introduction to graph. So dear children, same sums are given in your only worksheet 2nd and brain teachers. So please try to solve revise this introduction to graph. Okay, so this will be the end of your FA2 syllabus. So after that, after 2 days I will send you a video on YouTube revision of your FA1 syllabus. So today is your Monday. Next Wednesday I will send you the topic squares and square roots. So thank you very much. Have a nice day.